cement and now guilty for almost 5 years. I sit in Gurgaon office, so I'm based at head office, which is in Gurgaon. And I thank each one of you for taking out time and be a part of this discussion with us. So I will not call this a seminar or a webinar because I will take few content, I will get into the discussions, but at the end of this discussion, we will have a question and answer session, and we can have open queries also. So what I understand, people from different geographies, people from different areas have joined. We also know that situation because of COVID is very challenging and things are not moving as per normal till now. So the whole objective going forward will be how we can become more sharp, how we can become fast, and how we can become more optimized. There will be definitely shortage of labor. There will be definitely time pressure in the projects. So looking all the aspects, we need to have this discussion. I also understood that the discussion we will continue in Hindi and partially English. It will be mixed just for the sake of audience. So start करते हैं हम the discussion. I will cover the entire application chain, how it starts, what are the applications, what product portfolio. So let's quickly start now and yeah. So this is the agenda for today's discussion. We will start with introduction and importance of rebarring. What is rebarring basically? What is everything that is involved in rebar application? So it starts from a design, it starts from detection, drilling, cleaning, how you calculate the volume of mortar, then how you bid or how you work for tenders. We will also try to touch on that. And last is inspection and what is the importance of inspection. At the end, we will close with the key takeaways and a question and answer session. So this is the overall agenda for discussion. We will try to be on time. So we will squeeze and we will be very precise on the discussions. Okay. So I will start with what is post-install rebar. हम हमेशा बात करते हैं कि साइट पे रीबारिंग है, साइट पे एंकरिंग है, बट दोनों चीजें अलग अलग हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस इन एंकरिंग एंड रीबारिंग. सो रीबारिंग इज प्योरली वेयर यू आर यूजिंग योर नॉर्मल स्टील बार, योर टीएमटी बार. जहां पे भी हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज आवर रीबार एप्लीकेशन. Wherever we have concrete to concrete connection, when there is an already existing concrete member, RCC member, and we are making few modifications, few extensions in that member, there we are rebarring. So it involves two components. एक हमारा chemical है और दूसरा मेरा steel rebar, the TMT rebar which I have. This is called rebarring. Objective simple है. आप लोग सब काम करते हैं, हम देखते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग साइट्स पे. कहीं पे हो सकता है कि फ्लोर ऊपर बढ़ा रहे हैं, देयर माइट बी फ्लोर एक्सटेंशन, देयर माइट बी बीम फ्रॉम कॉलम, कोई अपना एलिवेशन बढ़ा रहा है, देयर कैन बी स्लैब कटआउट्स क्लोजर. सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन दैट कम्स एट अ पर्टिकुलर साइट. दिस इज रीबारिंग. द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज एंकरिंग. सो एंकरिंग इज बेसिकली वेयर यू हैव अ स्टील टू कंक्रीट कनेक्शन. जहां पे भी आप किसी मेंबर को जोड़ने के लिए, किसी मेंबर को रेस्ट कराने के लिए स्टील प्लेट लगाते हैं कंक्रीट के ऊपर और उसको बोल्टिंग करते हैं. आप बोल्ट बोलते हैं उसको, या एंकर बोलते हैं, आप उसको फास्टनर बोलते हैं. सो ऑल आर सिमिलर टर्म्स यूज्ड फॉर अ कॉमन थिंग. तो जहां पे भी हम स्टील प्लेट को फिक्स कर रहे हैं कंक्रीट पे, दैट इज माय एंकरिंग. एंड एंकरिंग नाउ इन्वॉल्व्स अ थ्रेडेड रॉड और अ मैकेनिकल पार्टनर. केमिकल मैकेनिकल कोई भी हो सकता है. सेकेंड इज माई प्लेट, जो स्टील प्लेट हम फिक्स कर रहे हैं. एंड इफ इट इज अ केमिकल एंकर, देन द थर्ड पार्ट इज द मोटर, द केमिकल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंकरिंग एंड रीबारिंग. Okay, now there are certain benefits and advantages of post-install rebar system. आपको भी समझना होगा कि रीबारिंग किन किन तरीकों से फायदेमंद है, या कभी रीबारिंग का डिसीजन, पोस्ट इंस्टॉलेशन का डिसीजन क्यों लिया जाता है. तो फर्स्ट टॉपिक इज फ्लेक्सिबिलिटी.
The post-install rebars can be installed at any location. आपने देखा होगा जब हिल्टी इंडिया में आई थी, it was 1996 when we entered Indian market. So there was nothing like rebarring, and people were very interested. People were very excited to see that steel can be bonded with concrete. Simply जब लोगों ने देखा कि आप एक केमिकल के साथ सरिया चिपका रहे हैं कंक्रीट पे, so that was really exciting for people. And today also, if you observe, so can I request everyone to mute their mics? We will take the questions and discussions at the end. Thank you. Also, one more request. So we all are working from home. I am also at home, so there might be a disturbance. Really sorry for that. And second, if there is a drop in the call because of poor network, so be patient with us. I will rejoin, or the network will reconnect in another 2 minutes after the drop. Thank you. So flexibility. Now it has become very easy. अब आप कहीं भी कुछ भी मिस हो जाता है, so we just simply drill it, we pour the chemical, हम मोटर डालते हैं और सरिया लगा देते हैं. And clients, customers have also understood this, that it is an easy process and it can be done very quickly. Saving form work. So there can be certain connections like staircase. आपने देखा होगा staircase का जब हम form work बनाते हैं, जब हम shuttering लगाते हैं, ready करते हैं उसको, so it is one of the most complicated thing. क्योंकि उसकी शेप की वजह से, उसकी ज्योमेट्री की वजह से, या उसमें फ्लाइट है, लैंडिंग है, डिफरेंट लैंडिंग बीम्स हैं, so it is one of the complicated structure that you see in the overall structure or the building. तो उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म वर्क बनाना, शटरिंग काटना, और उसके बाद उससे कोई मेंबर निकालना, तो उसको पंचर करना पड़ता है. एंड नन ऑफ द क्लाइंट वांट्स टू वेस्ट प्लाईवुड. कोई नहीं चाहता कि मेरी प्लाईवुड पहली बार में वेस्ट हो या पंचर हो. Everyone wants to take maximum repetitions out of that. So इसीलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हम बहुत बार प्लान्ड रिबारिंग भी करते हैं. सो प्लान्ड रिबारिंग से मेरा मतलब है कि हमने जानबूझ के वो कनेक्शन, वो मेंबर छोड़ दिया है और हम उसको बाद में जोड़ते चलेंगे, बाद में करते चलेंगे रिबारिंग से. द नेक्स्ट फास्ट इंस्टॉलेशन. अब अगर आप देखेंगे कि जो केमिकल है या मोर्टार है, उसमें दो कैटेगरी हैं, लो क्यूरिंग एंड फास्ट क्यूरिंग. So totally depends upon the project base, totally depends upon the geography, totally depends upon the temperature and environmental condition. या आप स्लो क्यूरिंग केमिकल यूज करते हैं या फास्ट क्योर केमिकल यूज करते हैं. ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एम्बेडमेंट डेप्थ. अब हो सकता है कि आपके रिबार की जो एम्बेडमेंट डेप्थ है, जो ड्रिलिंग डेप्थ है, इंस्टॉलेशन डेप्थ है, इट इज समवेयर 1100, 1200 और 1000. सो देयर यू नीड अ स्लो क्यूरिंग केमिकल, क्योंकि आपकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि वो पता चला फास्ट क्यूरिंग केमिकल हम यूज कर रहे हैं तो वो इंजेक्ट करते करते ही सूख जाता है, ड्राई हो जाता है. सो दैट इज वन चैलेंज एंड दैट इज वन पॉइंट व्हिच डिफरेंशिएट्स दीज टू कैटेगरीज ऑफ मोर्टार, व्हिच इज स्लो क्यूरिंग एंड फास्ट क्यूरिंग. Last part is the well-established technology. So if you will see today, you have codes, guidelines around the application on basis of which we submit designs, we do calculations, and even the structural consultants uses the same codes, formulas, and softwares, right? So it is nothing like a trial and experiment. It is now a well-established technology, which is backed by different codes, guidelines, and different product approvals, which we will discuss further in the presentation. So these are few of the advantages and benefits of rebarring. Now there are few challenges also with the application. And what are the challenges? The first challenge is unskilled labor. So हमारे साथ भी होता है कि हमारी एक फिक्स टीम है, 8 लोगों की, 10 लोगों की. एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम उनको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर एक दूसरा ग्रुप आता है, एक दूसरी टीम आती है, या दूसरा एग्जीक्यूशन वाले लोग आते हैं, या किसी एक साइट पे ही एक टीम काम कर रही है और दूसरे साइट पे मुझे बंदे चाहिए या मुझे एक टीम चाहिए. So every person has different expertise, every person has different skill set. हर कोई आपकी टीम में भी बिल्कुल एक जैसा काम नहीं करेगा. And the problem with this is that you can have very good reputation or results at one site and you might get different results at different site. But what I understand that as a contractor, as a construction firm, as a construction company, or as a vendor also,
the overall objective is कि हम अपनी reputation बनाएं, we develop ourselves, we develop our team, we keep building and we keep increasing our business, right? Next challenge is time pressure. So projects are now becoming very tight with schedule. RERA आया जब से, so builders now are focusing more to complete the projects on time. Even the government has similar focus. The third part is health and safety. There is one process which is involved is drilling. और अगर आप जब देखते हैं आपकी लेबर, आपके लोग काम करते हैं, या हम खुद भी जब ड्रिल करते हैं, जब डेमो करते हैं, सैंपल करते हैं, तो एक ड्रिल करने में ही कितनी मिट्टी, कितनी डस्ट निकलती है. देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट evolution from even one drill, right? And now let's suppose you have 5,000, 10,000 or even 20,000-30,000 drillings to be made on a project. तो आप समझ सकते हैं कि उन 20,000 सरियों में कितनी धूल, कितनी डस्ट निकलती होगी. And every year you see NGT puts a ban on construction activity. हर साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बैन लगाता है. And this is one of the component, one of the reason of that, this dust. The fourth part is installation quality. Now, if your team is not trained in a similar manner, there will be two big challenges. Now you will have to think from a businessman perspective. अगर मेरे लोग trained नहीं है, तो दो challenges आ सकते हैं. The first challenge can be quality. If different people are working in different fashion or different style, so the results can be different, right? जिससे साइट पे undesired results आ सकते हैं, जिससे साइट पे फेलियर भी हो सकते हैं, जिससे साइट पे लोड कैरिंग कैपेसिटी डिजाइन हो सकती है या एग्जीक्यूट हो सकती है. एंड सेकेंड इज कॉस्टिंग. सो एक स्किल्ड आदमी और एक अनस्किल्ड आदमी में या लेबर में, दैट इज अनदर बिग डिफरेंस. हाउ दे डू इट विद परफेक्शन. तो अगर कोई अनस्किल्ड आदमी या कोई कम सीखा हुआ आदमी काम करता है, सो डेफिनेटली देयर विल बी मोर वेस्टेज. एंड एज अ बिजनेसमैन वी नीड टू थिंक हाउ वी कैन कंट्रोल दैट वेस्टेज. So this was little background which I was giving you regarding the application. What is rebarring? What is anchoring? What are the differences? What are the benefits of rebarring? And what are few challenges that we see with rebarring? Now we will see how we can overcome these challenges. But before that, we will discuss the application. So these are the few application pictures, and you all will agree with me that you see these kind of applications at project sites. So column extension सबसे मेजर एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा साइट पे देखी जाती है. राफ्ट से कॉलम निकालना या कॉलम टू कॉलम एक्सटेंशन, FAR रिवीजन होना, फ्लोर एरिया रेशो, उसकी वजह से 2 मंजिल ऊपर बढ़ा रहे हैं, 3 फ्लोर ऊपर बढ़ा रहे हैं. So this is column extension, which can be from raft or which can be from column. So these are the two applications that we see on project sites. Next is beam from column. कहीं पे भी कोई beam मिस हो गया है, हम नया beam निकाल रहे हैं, existing column है. So this is beam from column application. The third application is rock anchoring. So generally we see this application where we have a rocky plateau. जहाँ पे हम कॉन्क्रीट पे नहीं, जहाँ पे हम रॉक स्ट्रेटा पे रिबारिंग कर रहे हैं और एंकरिंग कर रहे हैं, ग्राउटिंग कर रहे हैं. फोर्थ वन इज स्लैब कनेक्शन. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी देयर आर एप्लीकेशंस ऑफ स्लैब टू स्लैब, जहाँ पे हम एक एग्जिस्टिंग स्लैब से उसको आगे बढ़ा रहे हैं. इट कैन बी छज्जा एक्सटेंशन, कैन बी स्लैब एक्सटेंशन, इट कैन बी अ कटआउट क्लोजर. सो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस वेयर we are extending slab. The next application can be wall extension. एक already existing wall है, now we are extending it further and there we are doing this horizontal rebarring. And the last is shear connector. So shear connector is kind of non-critical application, or I should say medium duty or light duty application, which is generally used for कॉन्क्रीट जैकेटिंग्स, जहाँ पे भी हम किसी एग्जिस्टिंग मेंबर का साइज बढ़ा रहे हैं या लेयर ऐड कर रहे हैं, और वी आर इंक्रीजिंग बेसिकली द थिकनेस और द साइज ऑफ द मेंबर.
So you can see shear connectors in column jacketing, you can see shear connectors in beam jacketing, or you can also see shear connectors in raft jacketing, basically thickness जहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं. So these are typical applications that you see at a job site, and I have tried to put few pictures over here. Now we have seen what are rebar applications, but the topic is that every application is not same. मतलब अगर हम कहेंगे मोटा मोटा तो हम कह सकते हैं सब कुछ रीबारिंग है, बट एवरी एप्लीकेशन इज डिफरेंट. अगर आप देखेंगे now how are they different? Now I have tried to include few more applications here just for your understanding and just to help you. So first picture is new column from raft or new wall. The second is beam or slab from column. Third is raft or footing extension. Fourth is slab. Fifth rock and last is column extension, which is column to column. तो अगर आप देखेंगे ऊपर की जो फर्स्ट रो है, these all are critical applications. So these all includes your beams, your columns, your footings. That means they are including your core, your main structural members, जिन पे आपका heavy load आना है. So in these applications, you will see that diameter of rebar is 16 to 40. अगर आप PMT का साइज देखेंगे, नॉर्मली बीम्स में we get 16, 20 and in few cases 25. वहीं आप कॉलम में अगर देखेंगे, so it normally starts with 20, then 25 and 32 and 40 in very few cases or in high rise projects or in metro projects. तो अगर आप देखेंगे ये बीम, कॉलम, वॉल, ये हमारी क्रिटिकल एप्लीकेशन है जहाँ पे रीबार डाया मेरा 16 से 40 mm के बीच में रहता है. मूविंग ऑन टू द सेकंड रो, which can be a छज्जा extension, it can be staircases, it can be wall to wall, it can be slab cutouts जहाँ पे हम उन्हें बंद कर रहे हैं, it can be corbel, it can be partition wall from slab, a normal partition wall. इन सब members पे आप देखेंगे जो second row में है, that there is slightly lesser load. That is why I have given this indication with red. तो अगर आप देखेंगे ऊपर से मैं नीचे आता हूँ तो मेरा लोड और मेरा क्रिटिकलिटी कम होता जाएगा. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीने में, छज्जे में या वॉल में, स्लैब कटआउट में, नॉर्मली आप देखेंगे जो सरिये का साइज है that varies from 10 to 16 and normally people uses like in chhajja or slab people uses 10-12, in staircase also 10-12, wall 10-12, slab cutout 10-12, corbel. So in very few cases you will see 16 mm, otherwise it will be 10-12 dia rebar. So you will see here is critical 16 to 40, here the criticality is lesser, loads कम है, criticality कम है. And there is last part which is non-critical, जहाँ पे बहुत nominal load आना है या load आना ही नहीं है. These applications can be shear connector, just for attaching or connecting shear pins. This can be non-structural elements, just for architecture view or beautification. It can be lintel beam. Now lintel is one important application that comes on most of the sites, or I should say that comes on most of the residential sites. Correct, which is purely non-critical application. Pedestal rebar आपको सिर्फ एक riser बनाना है 100-200 height का. Wall ties are used in the projects where the projects are seismically designed and you are connecting walls with your core concrete members, structural members like column. There we give wall ties. Stub column purely the architectural point of view. So last you will see that the criticality is reduced as compared to the above two cases, and diameter of rebar is also 8 to 12. आप यहाँ पे देखेंगे हर केस में 8, 10 या 12 का सरिया यूज होगा, उससे ज्यादा का सरिया यूज नॉर्मली नहीं होता है in almost 98% cases में. So this slide is very important to understand because the product which you need for row 1, you might not need for row 2. The product which you need for row 2, you might not need for row 3. तो यहाँ पे फर्स्ट रो में रिक्वायरमेंट्स, लोड्स, क्रिटिकलिटी, स्पेसिफिकेशंस सब कुछ अलग है. सेकंड रो में आपकी नीड्स, आपकी क्रिटिकलिटी सब कुछ अलग है, और थर्ड रो में आपकी नीड, आपकी क्रिटिकलिटी, आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है. एंड हाउ द डिसीजन मेकिंग इज. सो I will cover here only and then we will further discuss that step in the design part.
सो पहले वाले के लिए आप देखेंगे नॉर्मली एवरीथिंग इज डिजाइन बाय अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और द डिजाइनर बिकॉज दीज आर क्रिटिकल स्ट्रक्चरल मेंबर्स. सेकेंड वन आप देखेंगे मोस्टली कॉल्स आर टेकन बाय द डेवलपर्स, द ओनर्स हिमसेल्फ और द सिविल कॉन्ट्रैक्टर. थर्ड आप देखेंगे सिमिलर सिनेरियो, जो डेवलपर की जो क्लाइंट की टीम है साइड पे या जो उनकी इन हाउस डिजाइन टीम है या जो कॉन्ट्रैक्टर है प्रोजेक्ट पे, दे टेक्स दिस डिसीजन, राइट. So this is all about different applications that you see at every project. So I have tried to cover here almost 18 applications and there can be further more. So the idea is we need to look into every application and its potential. Like lintel, it can look small, but let's suppose in a residential project, in one flat, how many lintels you have and how many number of flats you have in one tower, and then how many towers are there in that project. So lintels can go up to 1 lakh rebar, 1.5 lakh rebar in one residential project, or in it might be in non-residential projects also, few of the places, right? So we need to explore that, understand potential के application क्या है, rebar का diameter क्या है, और requirement क्या है, and on that basis we take a decision that which product has to be used. हर जगह मैं एक same product नहीं लगा सकता, right? This is all about the applications. Now, what challenges do we face today? Now, as a customer, as a company, as a contractor, you will see time pressure. आपको एक client से काम मिलता है, आपको एक developer से अगर काम मिलता है, you also have a time limit कि आपको 1 महीने में, 1.5 महीने में उतना rebaring पूरा complete करना है, whatever number it is. Second is installation quality. आपको वो भी ensure करना है कि आपकी quality में कोई issue ना हो, because your bills, your payments are somewhere related to your installation quality and checks after the quality, right? Third part is health and safety. Health and safety को भी आपको ensure करना है. Reason being, health of your people is very important. The people who are working with you, your teams, your laborers, and safety. So we were talking about dust. So the safety is coming from there because 1000 drill 2000 ड्रिल एक टीम करती है तो वो कितनी डस्ट अपने अंदर इनहेल करती है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड हियर ओनली यू विल आल्सो सी कि इस डस्ट की वजह से जो हमारी टूल्स हैं, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है, वो डस्ट उन्हीं के अंदर जाती है, फिर रिपेयर आता है, उनकी जो ब्रेक डाउन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जल्दी रिपेयर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डस्ट, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. और इंसर्ट्स जो हमारी ड्रिल बिट्स हैं, same impact goes on our drill bits also. We will discuss further in the presentation. And lack of skilled labor. So this is also another challenge for you, where we try to support you by doing trainings, seminars, different sites. So these are few of the challenges that आप भी face कर रहे हो, which we have understood from multiple customers now. So this is the entire flow of rebaring. Just give you a brief idea. So rebaring as an application, it starts from design. सबसे पहले उसका डिजाइन करते हैं, depending upon the application, whether it is a column extension, it is beam from column. हर केस एक अलग डिजाइन है, हर rebar की डेप्थ अलग आ सकती है, हर कनेक्शन की डेप्थ अलग अलग आती है. So there we do this design, and structural consultants also do design for every connection. Second is detection and positioning. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में अबाउट द स्कैनिंग टूल्स. द थर्ड इज ड्रिलिंग. फोर्थ इज क्लीनिंग. सो आपने जब ड्रिल कर दिया, देन वी विल डिस्कस ऑन क्लीनिंग. वंस यू हैव क्लीन्ड, देन वी विल डिस्कस ऑन द मोर्टार पोर्टफोलियो दैट वी हैव एंड हाउ डू यू फिल इट और इंजेक्ट इट. एंड लास्ट इज टेस्टिंग और इंस्पेक्शन, why it is not required and why it is required. So this is the entire flow chain of rebaring process. Now I will take you through all these process one by one. तो अगर आप देखेंगे, जो सबसे ऊपर वाली रो थी मेरी, the most critical one, where the load is super heavy and the diameter of rebar is 16 to 40. So this is how we design. And why design is important in every cases. Now you understand कि हर कनेक्शन अलग अलग है, हर कनेक्शन पे लोड अलग अलग हो सकता है, हर कनेक्शन की स्पेसिंग अलग अलग हो सकती है. सो एवरी कनेक्शन कैन नॉट हैव सेम एम्बेडमेंट.
So the very first importance and criteria of understanding is that every connection has to be designed. बहुत बार हम कंपैरिजन में जाते हैं कि वो प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट इतने का है, दूसरे प्रोडक्ट भी हैं मार्केट में. सो आई विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड पैरामीटर्स ऑन विच वी शुड कंपेयर. एंड द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज डिजाइन. कि किसी भी कंपटीशन की अगर आप बात करते हैं या कोई और प्रपोजल है अगर किसी के पास, सो दूसरे कंपटीशन का या कंपनी का डिजाइन सबमिशन क्या है, उनके डिजाइन में क्या डेप्थ है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. Second is my scanning. Okay. So यहाँ पे आप एक पिक्चर देखेंगे. We have purposely put this picture. आप बहुत बार फेस करते हैं that you drill at one place, वहाँ पे सरिया आ जाता है. You drill at second place, वहाँ पे भी सरिया मिल गया. Then you drill at third place. And in this case, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, आप देखेंगे you had tried already 3 times, right? So on the 4th time you got your required depth. तो अब अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप 1000, 2000, 10,000 ड्रिलिंग कर रहे हैं एंड एवरी टाइम यू नीड टू डू एन एक्स्ट्रा होल, जस्ट इमेजिन द टाइम यू आर वेस्टिंग. एंड योर लेबर, योर टीम इज पेड ऑन डेली बेसिस, राइट, on the labor rates. So as a businessman, as a contractor, as a company, we need to save our time first. So faster we execute one job, quicker we will go to the second job. Right. So this is very important. Now, why it is also important for structural safety. आपने जितनी बार एक्स्ट्रा ड्रिल करा है, आपने उस ओरिजिनल कंक्रीट को, स्ट्रक्चरल मेंबर को डैमेज किया है. रीफिलिंग कॉस्ट ऑफ दीज एक्स्ट्रा होल्स. बहुत बार क्लाइंट या कंसल्टेंट या पीएमसीज बोलते हैं कि जो आपने एक्स्ट्रा होल करे आप इनको वापस भरिए बिकॉज यू हैव डैमेज्ड दिस कंक्रीट. सो दैट इज एन एक्स्ट्रा होल कॉस्टिंग. ड्रिल बिट्स ब्रोकन व्हाइल हिटिंग रिबार्स. अब ऐसे में बहुत बार क्या होता है कि आपकी ड्रिल बिट अटक जाती है, वो टूट जाती है, या बार बार ऐसे मल्टीपल टाइम्स यूज करने पे उसकी लाइफ कम हो जाती है. नाउ इमेजिन हियर यू आर सपोज्ड टू डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9. आपको 18 होल करने थे, 18 की जगह आपने 30 किए, राइट. सो 12 के लिए जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करा है, आपने जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया, आपने एक्स्ट्रा ड्रिल बिट्स वेस्ट करी है, that is your wastage. And as a businessman we need to save everything. So rise in machines maintenance cost. ड्रिल बिट तो वेस्ट हुई है, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है उसको चलना तो 18 होल के लिए था, बट वी हैव यूज्ड इट फॉर 30 होल्स. So now the number of working hours of that machine is increasing, correct? And that is now increasing the frequency of repair. Strength of concrete, structural stability and precious time that we have already discussed. So this is a big problem. Now how do we solve it? So we solve it with this scanner, which is PS300, which we launched in December in India. So it's been only 4-5 months. Very handy tool, single man operation, and very fast and accurate, very lightweight. So it detects your concrete rebar, the existing rebar, up to a depth of 200 mm. So I will not spend much time here. So it is all about the tool which scans up to 200 mm depth in the concrete. And now after scanning, you can mark your existing rebar locations. So once you have marked your rebar locations, then you clearly know the safe drilling areas. So एक अगर हम स्कैनर ले लेते हैं और हम मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले हमने फटाफट से हर लोकेशन को स्कैन करा, मार्किंग करते चले गए, दूसरा लेबर दूसरी टीम आई और वो ड्रिल करते चले गए. नॉट वन एक्स्ट्रा सिंगल एक्स्ट्रा होल. सो नाउ यू कैन इमेजिन द प्रोडक्टिविटी एंड टाइम सेविंग ऑफ योर टीम, राइट. दिस इज अबाउट स्कैनिंग एंड द स्कैनर इज PS300. Moving on to the machines and drill bits. So we have a complete portfolio. जैसे हमने देखा था, हर एप्लीकेशन अलग अलग है, हर एप्लीकेशन में डायमीटर की रेंज और रिक्वायरमेंट अलग होगी. सो अगर आपकी डायमीटर ऑफ रीबार इज 28 to 55, so we have a 7 kg portfolio. We have T70 and we have T70D. So this is in the 7 kg portfolio. वहीं पे अगर आपकी एप्लीकेशन रेंज इज बिटवीन 18 to 32 mm rebar, we have a 5 kg portfolio which is T50 AVR. And then the last row of application which I presented to you, यहाँ पे मेरी डायमीटर की
रेंज जो है वो 10 से 20 है. देयर वी हैव अ 3 kg पोर्टफोलियो वेयर वी हैव दीज 3 टूल्स. So this is A36, which is a battery tool, which is cordless tool. So this is very useful. What we have seen and understood from the market, that cordless tool is very handy and very useful. So this is the entire portfolio depending upon your drilling size and diameter of rebar range. Similarly, we have different inserts, we have different tool bits, depending upon the performance and depending upon the diameter of rebar. So we clearly differentiate everything depending upon your application. And with all these tools and inserts, what we get is 213. So multi tool service 2 years cost warranty, and second one tool service first month repair warranty, and third is 3-day turnaround time for the service. So with all the tools, we get 213 as a service. Next is clean. Can I request to please mute your mic, whomsoever mic it is? Yeah, thank you. Next important part is cleaning. तो जब आप रीबारिंग को देखते हैं, so the simple process starts with आपने मशीन ली, ड्रिल बिट ली, आपने ड्रिल बिट लगाई, you started drilling, आपने ड्रिल कर दिया, उसके बाद you are supposed to clean the hole. एंड अगर आप एक प्रोडक्ट के अप्रूवल के हिसाब से देखेंगे या ETA अप्रूवल के हिसाब से देखते हैं, so the requirement of cleaning is 2x2x2 for few products or 4x4x4 for few products. So what does this mean? So this 2x2x2 means, you can see where my cursor is, 2 times blower pump 2 बार, फिर 2 बार brush, फिर 2 बार blower pump. And for certain products is 4x4x4. So with Hilti, every product is with 2x2x2 clean. But we are not sure कि हमारी टीम साइड पे हर होल को, हर सिंगल रीबार को, कनेक्शन को ऐसे ही एग्जीक्यूट करती है या नहीं. Now, if you see the time consumption, let's suppose you have got a job, you have got a tender where you have 10,000 number of rebars, right? And if you see, 27% of the time is consumed in drilling. Next, 24 is consumed in cleaning, and the rest is injection and settings. So you see there is a big component which is getting consumed in cleaning, because this 2x2x2 blow, brush and blow. And with few products, it is necessary to have compress air cleaning. So the good part about Hilti products here is that you need not to have a compressor at project site. All the products are manual cleaning approved, and there is no compressed air cleaning requirement. Correct. So you are wasting this 24% of time in cleaning, and also you're not ensuring, you are not sure whether your people, whether your person are doing or executing the job perfectly. Because I also cannot assume that 10,000 rebars are 100% properly cleaned by the labor who is executing it, right? So this is a challenge for you as a businessman, this time wastage, and second, to ensure the quality, because there might be a failure of rebar because of this issue. What we have seen, बहुत सारे cases में हमने देखा है यहाँ पे hole was not cleaned properly, rebar was fixed, and when it was tested it came out, और उसकी वजह से फिर payments रुक जाती हैं, delay होती हैं, payment cut होता है. So as a businessman, this is all wastage for you. So what other challenges do we have with this? Now, if you see the image, it is a hammer drilled hole which is properly cleaned. और ये होल के अंदर की एक पिक्चर है जहाँ पे मेरा सरफेस आप देखेंगे पिक्चर है where it is uneven, rough surface. ठीक है, so chemical goes into this roughness and it makes a bond. It's a bonding between this rough surface of concrete and my chemical. Second picture, if you will see, there is a dust if the hole is not cleaned properly. So chemical will create a bond with this dust and the rebar will come out. इसीलिए hole का clean होना बहुत जरूरी है. And what we have seen is, if you see the graph, that there is up to 70% reduction in the performance because of the cleaning. अगर वो होल प्रॉपर्ली क्लीन नहीं था तो वो रीबार अगर 1 टन लोड लेता या वो 5 टन लोड लेता, अब वो 1.5 टन लोड लेगा. अगर वो 10 टन लोड लेता है एक रीबार, नाउ इट विल टेक अप टू 3 टन ओनली. सो देयर इज अ बिग ड्रॉप ऑफ 70% इन दी कैपेसिटी और इन दी परफॉर्मेंस. और अगर क्लाइंट के सामने ये आता है
या कल को पीएमसी के सामने आता है, देन ऑल ऑफ अस सी अ बिग चैलेंज एज अ बिजनेसमैन और एज अ कंपनी, राइट? So what we introduced for that? So we introduced hollow drill bits, SafeSet. What SafeSet does? So there is no requirement to clean the hole as per the process, which is 2 by 2 by 2, and you can just directly use this hollow drill bit and you will get the similar performance. If you see the graph where the cursor is, तो आप देखेंगे कि जो आपका क्लीन होल है, जो आपने मतलब नॉर्मल ड्रिल बिट से किया है और उसके बाद साफ किया है ब्लो आउट पंप से, ब्रश से, ब्लो आउट पंप से, and second scenario or second line is where you have used the hollow drill bit and then you have not further cleaned it. The performance will be same, right? So this is how everything happens. Drilling में देखते हैं, so we have got hollow drill bit, we have got 7 kg, 5 kg, 3 kg portfolio and this is the vacuum cleaner. So हो क्या रहा है ideally, यहाँ पे आपने वो 24% टाइम बचाया है of the complete project. So 24% से मेरा मतलब है, let's suppose if you are supposed to complete one project in 30 days, so I assume now we can complete the project in 20 to 23 days because we have eliminated 25% time consumption process. So first we have saved the time, the labor, manpower, and second is we have ensured the quality. कि अब मैं अपने ऑफिस में बैठ के भी मैं इंश्योर हूँ कि जो भी लेबर काम कर रही है अब वो होल क्लीन करे या ना करे, मुझे टेस्टिंग में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड ऑल दी प्रोसेस चेक्स एंड पेमेंट्स विल बी क्लियर. सो दिस इज पार्ट ऑफ ड्रिलिंग. Installation also I will go about the dispenser. So on the right side you will see a graph which shows that we can save up to 68% time in the process. तो ये एग्जांपल हमने लिया है जहाँ पे 16 डाया का रीबार लिया है, 3 रीबार के लिए ये टेस्टिंग हमने की. और अगर आप देखेंगे दिस लेफ्ट ग्राफ इज फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, जहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रिल बिट से, अपना सॉलिड ड्रिल बिट से, हैमर ड्रिल बिट से ड्रिल किया, 6 मिनट उसमें लगते हैं. फिर आप देखेंगे 2 मिनट क्लीनिंग में लगे क्योंकि आपको फिर ब्लो, ब्रश, ब्लो वो पूरा प्रोसेस करना है, एंड 3 मिनट्स इट टेक इनटू इंजेक्शन. एंड व्हेन वी मूव टू हिल्टी प्रोसेस, सो द टोटल टाइम कंजप्शन इज 3 minutes. The reason being, from 6 minutes you reach to 2 minutes because you are using a hollow drill bit, which is a faster process because there is no dust in the hole and your insert is performing better. Second, the cleaning process you have entirely eliminated, so now you are saving these 2 minutes and this time becomes 0. Third, when you are using a manual dispenser and here you are using the automatic dispenser. So the idea is, for a big job sites where you have rebars in 1,000 numbers or multiple of thousands, you can calculate, you can imagine this working and how fast and precise you can be on that job site. And the overall idea is to save time so that we bid, we tender, we go for the next project immediately. So this is the benefit that comes with the offer of hollow drill bit vacuum cleaner because it improves your health, safety and work environment, reduce preparation time, it eliminates cleaning as a process, it increases life of tools up to 20%. तो वो जो डस्ट निकल रही है ड्रिलिंग से वो आपकी मशीन्स में नहीं जा रही है, वो टूल्स में नहीं जा रही है, जो उसकी लाइफ को एनहांस करते हैं, इंप्रूव करते हैं. एंड देन देयर इज अ डिप इन द टूल ब्रेकडाउन कंप्लेंट्स एंड केसेस, राइट? इंक्रीजिंग एप्लीकेशन स्पीड टू 60% फास्टर ड्रिलिंग. So these are the benefits that comes with this overall SafeSet system process. Now I will move on to the injection and installation. So the biggest question for all of us is how do we calculate the volume of motor? As a customer, जब भी आप कोई टेंडर देखते हैं या आप कोई बिड करते हैं और या हम कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं, so how do we do that? Because tenders have the language of number of rebars. लिखा होगा कि 8 के 1000 सरिये, 16 के 2000 सरिये, 20 के 4000 सरिये. But how do we calculate the volume of motor? कि हमें कितना मोटर या कितना केमिकल लगेगा? And for that, what we have done is we have introduced a very handy, very beautiful and very simple app which you can download from Android phone or even from the iPhones. Volume calculator. You can go to your Play Stores or you can go to iOS, Apple Store, and you can search for Hilti Volume Calculator. And you can download the app. After downloading the app, you will be asked to select your country. आप उसमें country में India select करेंगे
और फिर वो आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा वॉल्यूम कैलकुलेटर ऐप का, एंड देन यू कैन यूज दिस वॉल्यूम कैलकुलेटर ऐप. So this volume calculator app has both the applications of anchoring as well as rebarring, and every connection, every single element can be precisely calculated for volume, right? And then we can have an idea कि मेरे पूरे काम में इतने rebar इजरायल के हैं, इतने rebar इजरायल के हैं, and this is how we reach and calculate the total number of foils required. So this exercise was a big confusion, big challenge. Now we have helped all of you, and we have simplified this. So I would request all of you after the call or during the call also, you can go to App Store or Android. It will just take a moment. So after the call, you can download and use it. So this is one point. So this is how the user interface of the volume calculator app is. आप ऐसे ऑप्शन देखते हैं, कॉन्क्रीट, हॉलो मिशनरी, सॉलिड मिशनरी एंड स्ट्रक्चरल रीबार. अगर आपका कोई भी एंकरिंग का एप्लीकेशन है, यू सेलेक्ट कॉन्क्रीट. आपका कोई भी एंकरिंग का एप्लीकेशन है हॉलो ब्रिक्स में, हॉलो मिशनरी में, यू सेलेक्ट सेकंड. इफ यू हैव एन एंकरिंग एप्लीकेशन इन सॉलिड मिशनरी, यू सेलेक्ट दिस. और रीबारिंग के लिए पूरा फोर्थ वाला ऑप्शन अवेलेबल है, द फोर्थ वन फॉर रीबार. Once you select this, you will see then product selection. वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे. You select the product which you are going to use, and after that you will see the element. आप कौन सा रॉड यूज कर रहे हैं. अगर रीबार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रीबार दिख जाएगा. You will select रीबार. It will ask for few more inputs. आपकी डायमीटर क्या है, डेप्थ क्या है. You fix everything, you input, and then you see this result. It will tell you what is the volume, 15 ml, 14 ml. कितना एक होल में लगेगा, कितना टोटल होल में लगेगा, कितने फॉइल आपको टोटल चाहिए. सो द आइडिया अबाउट द ऐप इज, टुडे यू माइट बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, योर एक्सेल शीट्स, और फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ अस. गोइंग फॉरवर्ड द आइडिया इज you become independent, you have an app in your phone, you can quickly calculate, you can get the prices from our team, and you can quickly bid and optimize your tender costs, right? So this is a fantastic app. We have got a very good feedback from the market, and I would urge all of you to go and get the experience of this. Now selection. So we already discussed about the applications. Now column, beam, foundations, framing, these are all critical heavy duty applications, and where we recommend to go with RE500 V3 or HY200R. So we have two ultimate products which comes with highest of the bond strength, which comes with all the relevant approvals, which comes with the design support. So these are the two products which has highest bond strength in the world. So RE500 V3, if I talk about, it is the product which has highest bond strength in the world as per ETA document, right? After that, all the approvals that you can imagine, आप जो भी सोच सकते हैं, whether it's a ETA is very basic. You think of seismic, you think of water tightness, you think for corrosion, you think for NSF, you think for drinking water. So any approval you ask for, and RE500 V3 has it, right? So this is the toughest mortar, I should say, and it is a slow curing chemical. Second is HY200R, which is a fast cure chemical. So in this category of approvals, design and critical applications, you will see two options: slow curing, fast curing. Then we move on to the lesser critical application, or this chunk, which is medium critical applications, जहाँ पे मेरा diameter of rebar 12-16 रहता है generally. There also you will see we have two category of products for this medium range. We have one slow curing, which is RE100, and we have one fast curing, which is HY170. Then I move on to the last category, which is almost non-critical or very less loading. यहाँ पे मेरा 8, 10 या 12 का सरिया है. And for that also we have two chemicals, one slow cure RE10 and one fast cure, which is HIT MM+. So you will see that your selection of product, आपका जो selection of mortar है, chemical है, वो totally application criticality पे, diameter of rebar पे, consultant specification पे और approval की requirement पे depend करता है. So we have from here to here, we have everything.
So if I talk about the price range of the products, so now we can say we have a 9 rupee chemical also, 9 rupee per ml. We have a product which is 7.5 rupee ml also. We have a 5 rupee product also. We have a 4.5 rupee per ml product also. Then we have 2.5 rupee per ml product also, and we have 2.5 rupee per ml product. So varying from 9 rupee to 2.5 rupee, we have everything for your requirement. But the idea is we need to discuss with each other as partners. So the best part is you come to us, we discuss, we understand the application, and then we suggest you something, recommend you something. So it is not about that we will suggest RE500 in every case. And it is also not right that we suggest hit MM in every case. So we understand the application, we understand the diameter of rebar from you, and then only we suggest something. But the idea of this slide is that different application, different chemicals, different approval, design, performance, and different price range. But there is everything. The idea is we have everything for you. So this is all about the portfolio. 100-year approval. So there can be certain projects or there can be certain clients which are designing their projects for 100 year. हो सकता है कहीं कहीं पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एंड स्पेसिफिकली सुपर हाई राइज बिल्डिंग्स विच हैज हाई नेट इन्वेस्टमेंट्स जिनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या आप देखेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स, या आप देखेंगे हॉस्पिटल्स, अगर कर्सर आप देख रहे हैं, important buildings like hospitals, communication building, towers, and power plant structures. So these kind of structures are generally designed for more than 50 years. And there you need a product which has approval. And I'm very happy to announce and inform you that we have just got 100-year rebar ETA approval for RE500 V3. So with this, RE500 V3 becomes only product in the world to have 100-year approval for anchoring and rebarring both. So I am re-emphasizing on my words. With this, I announce that RE500 V3 becomes the only product in the world to have anchor and rebar both 100-year approvals. Right? So that is why we call it the toughest one. Right. So this is what I was saying. If you will see the latest ET approval, which comes for 50 and 100 year, on my right I have an ET approval which came in for 50 and 100 year both, right? So with this, it has both the 100-year approval for anchoring as well as rewiring application, which none of the other products in the world is having right now. And also we have got an external testing which is beyond 100 year. So RE500 again becomes the only product which is being tested for 120 years. हमने ये एंकर रिबार दोनों के लिए टेस्ट करा के रिपोर्ट we have published for 120 years for anchor and rebar both the applications. So which is making it more stronger. Okay, then moving on to the next very important part, which is my dispenser. And what I see, generally these kind of dispensers are used in most of the products which are manual. Now my question is, we will discuss more on the Q&A session at the later half of the discussion in the last 15 minutes of the presentation. इसमें how I get to know how much I need to dispense. मुझे पता ही नहीं चल सकता कि मुझे कितना डिस्पेंस करना है या मैंने कितना डिस्पेंस कर दिया. And what are the problems? Higher effort. So it is a very strong spring or it's a very manual operation. अगर आपके लेबर को लेट सपोज 100, 150, 200 rebar रोज के करने हैं, तो you can imagine. Just try to use it yourself for a longer period and then we understand कि कितना challenging है, कितना painful है. So it's a very high effort tool. Second is chemical wastage. अब हमको जब पता ही नहीं है कि कितना डिस्पेंस हो गया, कितना और करना है, then we see a lot of chemical wastage. और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत जगह बहुत सारे होल्स में लेबर जब रीबार इंसर्ट करती है तो बहुत सारे केमिकल बाहर आ जाते हैं, वेस्ट हो जाता है. Right? So with these manual dispensers, we also see inconsistent filling. आपके होल में आपको पता ही नहीं है कि पूरा केमिकल कितना डलना था, वो डल गया है, नहीं डल गया है.
We are not sure of that. And we see all these challenges because no control on dosage. We do not know how much we have dispensed, how much more to dispense, dripping issues. So it is not a locking process. मतलब अगर आपका आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं डिस्पेंसिंग को, सो यू विल सी अ केमिकल वेस्टेज, वो ड्रिप होता रहेगा, वो minimum 20% wastage, or it can be more than that, because your labor is not a very technical guy. You do not know. Rohit, I guess you are muted. If you can please unmute once. Rohit, you are muted. If you can please unmute once. Yeah, audible? Hello? Yes, you're audible. Yes, you're audible. Okay, perfect. Yeah. So we were discussing about the challenges and the shortcomings of these dispensers. So wastage, low productivity, low consistency. We do not know how much you have already dispensed and how much more to dispense, and higher manual efforts. So this is a highly non-technical exercise that we do, that our team executed the project side. Now what we bring for you, we bring a battery operated automatic dispenser for you. So we have a 12-volt battery option with this dispenser. The dispensing capacity is 60 foils in one charge. So the battery, once charged, can dispense up to 60 foils. Second is cost saving. So you see a knob. So it's a volume fixing knob. So आपने वॉल्यूम कैलकुलेटर ऐप यूज करा, आपने उससे अपनी वॉल्यूम निकाल ली मोटार की एज पर द रीबार डायमीटर एंड डेप्थ, एंड देयर ओनली यू सी एन इमेज which shows you कि आपको नॉब कहाँ पे फिक्स करना है. वॉल्यूम कैलकुलेटर की ऐप के रिजल्ट में you will see where to fix the knob. So if you fix the knob exactly at this point, that means you have fixed now accurate volume, and every hole will get consistent volume, the same volume. Third is outlast. So manual dispensers, what I have seen, works up to 80 foils, 70 foils, or 100 foils. The life of the dispenser is 950 foils. So the dispenser goes for 950 foils, and one battery charge goes up to 60 foils. Volume calculator app we have already discussed. So with this, what you are doing, you are saving almost 20% of your volume. So I will like to share an example here. Let's suppose you have a job site, or you have multiple job sites, and for 1 year you have purchased, let's suppose, 1000 foils from any company. So 1000 foils you have dispensed with manual dispenser. Now I'm saying that if you can save up to 20% of the volume, that means now my similar job could be done with 800 foils. And as a businessman, what saving I have is 200 foils. So calculate in this aspect. Then I will smartly calculate what I have saved. Let's suppose you have a project where you require 400 foils, and you are calculating with the manual dispenser. Now my point is, if you can save up to 20% of the volumes, that means now you can do the similar work with 320 foils, or let's suppose 325 foils. So what is the saving for you? Your saving is your time, your consistency, and these 75 foils. And 75 foil means a lot in terms of value. So this is how you keep saving with safety and consistency as a businessman. And it's a fantastic tool. Just ask for a demo from the team available on ground, and we will be happy to help you in that. Yeah. So the best part about dispenser is it is workable for all the foils. So it is not like वो RE500 के साथ ही चलेगा या HY200 के साथ ही चलेगा. You can use any of the foils with the dispenser, or RE10 also, the latest RE10. I have not put it here because it comes with a hard foil,
तो RE10 भी बिना कैसेट के सेम डिस्पेंसर में चलता है। तो 6 केमिकल या मोटार can be dispensed with the same dispenser. Just my request is just try this combination of volume calculator app and ask for a demo for this operated dispenser, and please share your feedback and experience. Yeah. So this manual is now converted to automatic. The higher effort is now for dispensing. Automatic. This is from Spencer. Yeah. Yeah. So this was a very quick video which shows that how productive rebarring as an application is, and how efficient the latest HIT innovations are. I hope you loved watching the video, and I'm moving on to the last part of the presentation, which is testing. So why testing? With only simple two objectives, without investing a lot of time on this: verification of setting quality. Testing is only done to check whether the anchor or rebar is installed properly or not. Testing is not a criteria to judge any two products. So बहुत बार मैंने सुना है लोगों को कि आप इतना ही लोड लेता है, वो भी इतना ही लोड लेता है. So this is not the criteria. Reason being, what you are doing in testing, you are compressing the concrete. हम concrete को दबाते हैं और एक rebar को खींचते हैं. So in that scenario, we are not testing the concrete failure, and this makes it a very non-technical and non-advisable practice. So testing is only done to check the setting quality, कि वो hole properly clean था, chemical properly भरा हुआ है, या mechanical anchor properly torqued है. So testing is only done to check that. Second part is also to check the resistance, to determination of resistance. Many of times we see like natural stone, जहाँ पे हम rock anchoring करते हैं, वहाँ पे do not know the exact strength of the strata, or a lot of times old concrete where we do not have data, or we do not have a document about the grade of concrete, or bricks or blocks where we see inconsistent values in terms of strength of the base material. So there we just do it to determine the resistance of base material. Two objectives for testing.
that means you are sure your team, your leader is doing best job. The third part is dustless outside. This can be a key discussion with a client. So all this entire system can be leveraged as a contractor, as a company. You can also go to your client and you can do a presentation or you can give your proposal that we use SafeSet system. SafeSet system means your site, your job site will be dust free, right? Your people who are working around the site are safe, right? We will execute your job faster. We ensure that everything is done with 100% installation quality. Every hole is clean because of SafeSet. You can go to a client and say that I'm using a battery operated dispenser. That means you can check any rebar, you can check any hole. My volume of mortar dispense will be consistent throughout. My results in testing will be consistent throughout. So you can go to the client, you can go to the PMC, you can go to the civil contractor, and you can put your points that I used the world-class innovation, world-class system in this scenario to help in all these aspects. This is how the entire system helps you, right? Rohit, your voice is breaking. Can you please repeat? I believe, and also the slide has stopped showing. Am I audible, Preeti? Yeah, you're audible, but your voice is breaking, and actually the presentation is not showing. So at what slide I am presenting? The testing part. If you can please repeat that slide, and also the slide is not showing. So if you can please share that as well. Now is it visible? No, it is not yet visible. Let it there for some time. Okay, so I think I will just drop. I will rejoin. Yeah, Can you please pardon me for a minute? Sure, absolutely. Yeah, thank you. Sure. Yes, sir. I can see that the option has gone. Just give me just 1 minute. Rohit will just disconnect and reconnect so that the entire thing can again come up. And I'll ask him to repeat the testing part because I believe that is where the voice has gone haywire. Am I audible now? Yes, you're audible. If you can please share the screen. And No, the screen has not yet come. Yeah, the screen is loading. I think some poor network. Yeah, it is network issue. Rohit, if you can please repeat the entire testing because it has gone a bit off. But can you see the screen now? Yeah, the screen is now visible. Okay, so we discussed about the objective of testing, that why testing is done. So the first objective of testing is the verification of the quality. So it is just to check whether the anchor or rebar is installed properly or not. That means whether the hole was properly cleaned, whether the motor was properly dispensed, whether the motor volume was consistent throughout the entire application or in all the number of anchors or rebars you are doing. Just to check that, and there is no other objective of doing testing. So my point was, बहुत बार हमने सुना है लोगों को कि both the products are taking same load. कि आपका product भी उतना ही load लेता है, दूसरा product भी उतना ही load लेता है. So my request to them is the testing is not the criteria to say or judge that. Correct. And the second reason of doing testing is just to determine the resistance. तो बहुत बार जब हम रॉक एंकरिंग की एप्लीकेशन करते हैं और we get concrete blocks or hollow blocks or red bricks, so there we are not sure of the quality or we are not sure about the grade or strength of the base material. And in that scenario, we check with testing. We do random 15-10 testings and then we determine a resistance. These are the only two objectives of testing. Pritam, has the slide changed? Yeah, the slide change is also visible. Okay, and I'm audible clearly, right? Yes, you're audible. Okay, so
Now, the objective of the entire discussion and the presentation was to become faster and more productive. तो benefit क्या है हमारा उसमें? Let's suppose I have got a job site where the deadline is 60 days. And now let's suppose if I complete this job site in 50 days, I save 10 days. And I can go to the next job site, I can bid for next tender, I can go for next application 10 days prior. So I have saved 10 days. And same way I have saved the labor. So 10 दिन की वो labor, 10 दिन का वो time, and I can quickly move to the next project. So with this, I can say that if you execute 10 projects in an year, so at the end of the year, you will see you have executed 12 projects because you have saved 20% of your time. Always the right quality. My point was you can go to your client, you can go to contractor, you can go to PMC, and you can demonstrate, you can show them the innovations with which you work. आप जाके claim कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं that I use SafeSet system which is making your job site dust free. आपकी job site जो है वो dust free है, आपके लोग healthy हैं, they are not inhaling dust, and every hole is cleaned 100%. So there is no inconsistency, there is no labor issue or cleaning issue in the holes. Also, with this SafeSet system, you are saving time and your tools and inserts life. You are saving 20% of life of your tools and inserts. That means less breakdown, less repair, less wastage of cost on that. So you can once try the entire system, which starts from scanning, which starts from SafeSet, hollow drill bit vacuum cleaner, volume calculator app. You please download and ask for the battery operated dispenser demo HD500. So this is how the entire system helps you. Yeah. So takeaways, right design submission, which saves the embedment depth, because with the highest bond strength and the highest performing motors, you get reduced embedment depth. Scanning helps you in terms of saving tools, in terms of saving inserts, in terms of saving time, and in terms of reworking. Drilling, your time is saved. You are not cleaning now, you have saved 24% of cleaning time, your inserts are faster and less consumed. Cleaning, it ensures right bonding of motor. Now your connection will take the load for which it is designed. Dispenser, you save almost 15 to 20% of the volumes with battery operated dispenser, and every hole see consistent volume filling. Testing is only for unknown base material where we are not sure of the characteristic strength of the existing base material, right? So this is how every step will help you. So design, it just takes 10 minutes to design one connection aligned with the international codes and guidelines. Saves up to 25% of embedment depth because the bond strength of the products are highest. Scanning, we have discussed, it saves your time, it saves your tools and inserts. The SafeSet system, you achieve the desired bond strength, dustless environment for people, 2 times faster drilling, 50% time saving, 50% lesser manpower. Injection, you are doing accurate dispensing. Now we are sure about every single connection. It can be tested. Faster installations, and save up to 15% of the motor volumes with battery operated dispenser, and that means money, money and money. So time, labor, everything is turning into money saving, right? And in this situation of corona, so all the projects will be now very tight on the time schedules, and everyone will be working with lesser labor and lesser manpower available. So technology will be the next trend. And this we have already discussed in the last slides, that how you save 68% of your time with opting for the complete system of SafeSet and dispenser. So this means the entire system benefits you only in terms of time saving, labor saving, material saving, and overall it's money. So time is money, material is money, labor and manpower is money. So this is all from my side. I think I have taken a decent time of around 1 hour 15 minutes. All I could cover regarding what is rebarring, what all applications do you see at a project, how much can be the quantum, what motor portfolio that we have in India,
how do you select the motor, the type of chemical for a particular application, and then we cover the entire system solution. So this is all from my side, but yes, definitely one request. The future will be technology. The future will be lesser manpower, and the future will be innovation. So people, companies who will work with the smarter solutions, smarter technologies will definitely win the battle. So with this, Pritam, and I rest here for discussions and any open questions and queries. Thank you so much. Thank you so much, Rohit ji. Anyone having any questions, please unmute and please feel free to ask. You don't need to type. You can ask. आप किसी भी you know किसी भी तरह की क्वेश्चन आप पूछ सकते हो regarding chemical motors, regarding any presentation. If you want to revisit any slide, आप वो भी बोल सकते हो. प्लीज आप अनम्यूट करके आप प्लीज यू कैन आस्क सर. Shwanda, you can break the ice. Okay, then perfect. I don't see a lot of doubts. Yes, yes. Shwanda, do you have any questions because you were typing? Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon. Can you hear me? Yes, yes. Good afternoon. Yes, go ahead. हाँ, actually what happens? हम लोग सुन रहे थे. We are getting some, notification from HIT that in future, recent future, you are going to increase the product price for some percentage, 7, 8 or 12%. तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था. हम लोग कर सकते हैं बात थोड़ा? हाँ, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. हाँ, एक्चुअली क्या है कि नहीं, अभी तो सिचुएशन ऐसा है, फिलहाल मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ही टाइम लगेगा काम चालू करने में, और माने लेबर लोग भी अपने अपने घर जा चुके हैं. सिचुएशन जो स्कैरी मैटर आ गए हैं, वो एटलीस्ट उन लोगों को काम के फील्ड में फिर वापस लौटने में एटलीस्ट अनदर 3 to 4 मंथ लगेगा ही मिनिमम. आज से अगर अनाउंस कर दिए कि आज से आप काम कर सकते हो, तो अभी से अगर काउंट डाउन शुरू करें तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ लगेगा उन लोगों को फील्ड में वापस ले आने में. तो अभी अगर चालू होगा तो काम का जो क्वांटिटी अभी मार्केट में फिलहाल मिलेगा बहुत ही कम. आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो उसका देखेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसका जो हालत है क्या होगा, एकदम खस्ता होगा. और सेकेंड बात है, जो छोटा मोटा जो रेसिडेंशियल काम रहेगा, वो लोग भी एटलीस्ट कैश फ्लो के लिए अभी फिलहाल काम बंद रहेगा, करेगा नहीं. और जितना भी है एटलीस्ट काम उतना फ्लो नहीं रहेगा. तो कंपटीशन और बाकी जो चीज है बहुत ज्यादा रहेगा. इस टाइम में अगर आप प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएंगे तो और भी हम लोग दिक्कत में पड़ेंगे. और मेरे हिसाब से दाम बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका डिमांड अगर कम रहेगा तो एटलीस्ट जो भी है कुछ तो मैंने शेयर करना ही पड़ेगा. कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ सर, पॉइंट ये थोड़ा एक बार देखिएगा ये मैटर को. नहीं सर, डेफिनेटली पॉइंट वेल टेकन एंड समझ सकता हूँ सर. डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो दैट इज डेफिनेटली ट्रू, बट मैं यहाँ पे सर एक्चुअली एक 2-fold आंसर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. तो सर एक फोल्ड है जो आप बोल रहे हो प्रोडक्ट का मतलब दाम बढ़ना, उस पार्ट पे मैं मतलब बाद में आता हूँ. एक पार्ट में पहले आना चाहता हूँ जो आप बोल रहे हो कि मतलब कितना बिजनेस आएगा. तो एक चीज तो इट इज वेरी एविडेंट जो रोहित जी भी बोल रहे थे थ्रू आउट द सेमिनार, इज दैट कि लेबर का एक बड़ा चैलेंज जो आपको फेस हो रहा है एज एन एप्लीकेटर, लेबर का जो चैलेंज है उसका कई गुना कोई और फेस करेगा, एंड दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर.
क्योंकि उसका सॉरी थोड़ा मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैंने हम लोग जो एप्लीकेटर है, हम लोग का लेबर का उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर जो प्रॉब्लम का ह्यूज जो लेबर रहता है साइड में, जो एग्जीक्यूट करते हैं एक साइट को, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। माना वो जो ह्यूज लेबर है वो मिलना फिलहाल अभी 4-5 महीना मुश्किल हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर, इनफैक्ट वही जो आप बोल रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट पैरेलली सर मैं तीन डेटा आपको देना चाहता हूँ। नंबर वन इज दैट फॉर एनी रेसिडेंशियल और नॉट कमर्शियल, मैं रेसिडेंशियल पे पहले आता हूँ। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे रेरा और हीरा, फॉर वेस्ट बंगाल इट इज हीरा, एप्लीकेबल है। एज फार एज द लेटेस्ट हीरा गाइडलाइंस, जितना टाइम एक्सटेंशन अभी भी मिला हुआ है, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च, जिन लोगों को जितना टाइम एक्सटेंशन मिला हुआ है दैट इज फॉर 45 डेज। लेकिन लेबर का क्रंच अभी भी है। सो अगर मैं लेबर के क्रंच लेके चलता हूँ, सो दैट इज रफली, मैं मोटा मोटा आपको बोल रहा हूँ, दैट इज अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। जितने लोग पहले काम कर रहे थे उससे 7 गुना नीचे हो गया पर शिफ्ट पे लोग। दैट इज ऑन एन एवरेज, मैं अभी जो डेटा बोल रहा हूँ दैट इज ऑन एन एब्सोल्यूट एवरेज। तो अगर 45 डेज एक्सटेंशन मिलता है तो सर इट इज वेरी एविडेंट कि एप्लीकेटर्स को जो बिजनेस मिलना चाहिए था वो एब्सोल्युटली आपको, मतलब दैट शुड इंक्रीज, नंबर वन। एंड जब ये इंक्रीज करेगा तब ये सेफ सेट, HDE गन, ये सब जो टेक्नोलॉजीज है ये आपको असिस्ट करेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा काम, मतलब आप एग्जीक्यूट कर सको, नंबर वन। ज्यादा से ज्यादा आप, मतलब लोग जो है आपके यूटिलाइज कर सको, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आप निकाल सको अपने साइड से, अपने काम से। एज फार एज द प्राइस इंक्रीज जो आपके पास कम्युनिकेशन आया हुआ है दैट इज कंसर्न, so we deal with Swiss francs because we import our materials from Germany actually, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। तो बिकॉज ऑफ दैट रेट इंक्रीज ऑफ इंडियन करेंसी इसीलिए अफेक्ट हुआ है। परसेंटेज के ऊपर सर आप मत सोचिए अभी, दैट इज अ कम्युनिकेशन। परसेंटेज कितना प्राइस बढ़ रहा है, 8%, 9%, 10%, उसके ऊपर आप मत सोचिए सर। अभी अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग कैसे मैक्सिमम काम पकड़ सके। ये जो सिचुएशन है, आई फील पर्सनली इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन। वाई इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन? क्योंकि पहले क्या होता था, एंड आई बिलीव दैट यू विल अग्री सर, कि हम लोग एक साइट पे जाते थे और साइट पे जाके अगर ब्रेकिंग का भी बात करते थे तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये बोलता था मेरे पास 100 लोग हैं और काफी टाइम है, मैं तो तोड़ ही लूंगा। लेकिन आज सर वो सिनेरियो नहीं है। आज आपको एक छज्जा भी लगाना है तो आपके पास इनफ लोग नहीं है और इनफ टाइम भी नहीं है। आपका टाइम जो कंस्ट्रेंट है, जो जैसे हीरा और रेरा ने दिया हुआ एक्सटेंशन, वो अभी भी लिमिटेड है। और आज आपके पास एक शिफ्ट में काम करने के लिए इनफ मैन पावर नहीं है। तो एक एप्लीकेटर अगर उस साइट पे जाता है, एडिशनल मैन पावर बन जाता है, जो सारे के सारे काम हिल्टी रिलेटेड हो सकता है, दैट स्पेसिफिकली बिकम्स योर बिजनेस। आप वो बिजनेस कर सकते हो। और पैरेलली आप जैसे वो साइट को सपोर्ट कर रहे हो, जितने जल्दी आप एक काम एग्जीक्यूट कर सकोगे तो उसी साइट में आप एक दूसरा काम भी पकड़ सकते हो, और आप एक उसी लेबर को दूसरे काम पे भी भेज सकते हो। सो हैविंग टेक्नोलॉजीज जैसे आपका HDE गन, हैविंग टेक्नोलॉजीज लाइक सेफ सेट, हैविंग टेक्नोलॉजीज लाइक आपका वॉल्यूम कैलकुलेटर, ये सब आपको इनेबल करता है ताकि आप एक काम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर सको। ये अपॉर्चुनिटी को, मतलब दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, जो अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेते हैं देन वी कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस। हाँ, बट डेफिनेटली स्टार्ट होने के लिए टाइम लगेगा। मैं अनडाउटेडली, ये मैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट इट, बट जब स्टार्ट हो जाएगा सर, तब ये अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए सर। एंड एज फार एज प्राइस इज कंसर्न सर, यू नो दैट विथ हिल्टी यू आर ऑलवेज डिस्कसिंग, you are one of the VIP customers, so you are always discussing, so no problem। आप एक बार काम अगर देखो, then we are always there to support। but sir, मतलब obviously there is a price hike, but it is not an abnormal hike, don't worry on that side। it is a price hike, but we will be definitely there to discuss your specific cases and support you। Thank you so much, sir। Thanks, Pratik. Thank you sir। Do you see any other queries here, Preetham? Yes, somebody's also typing. Okay, Shwanda, thank you, Shwanda. Thank you for this question.
Shona or anyone, if there is any question regarding this application, because there is one slide specifically. Rohit ji, if you can go to that slide of all the applications जो आप एक picture में दिखा रहे थे. Next one please. नहीं और आगे. This one? No, another one. आप इसके आगे भी अगर जाओ. हाँ, this one. These are all the applications. इन सारे के सारे एप्लीकेशन में किसी को भी सर कुछ भी मतलब पूछना हो, बिकॉज दीज आर द एरियाज वेयर वी विल बी अर्निंग मनी. वी बोथ विल बी वर्किंग एज पार्टनर्स एंड वी विल बी अर्निंग मनी. सो इसमें कैसे काम आपको लाना है फ्रॉम द साइट और एनीथिंग एसोसिएटेड विद दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क सर. Okay. Then, Pritam, I think then further queries we can discuss one-to-one without wasting much time of the people who are here on the call. Sure. So from my side, I would like to say thanks to all of you who are there on the call. It was long 1.5 hour of presentations and discussion. I felt very good interacting with everyone on this topic. I just wish that all of you first stay safe with your families. The work will resume soon, and we wish to be more productive with all of you. So we are there for the support. Just reach out to our team members who are there for any demonstration, for any query or any application understanding if you still feel doubts over there. With this, I would like to thank each one of you and just wish for your good health and safety. Yeah. So thanks from my side. Thank you so much. Thank you so much, Rohit ji. Okay, I think we can conclude, Pritam. Right. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you so much.